Hi guys, welcome back to the channel. Thank you so much for sending me all the messages that you guys have sent me after my last video and leaving nice comments. Thank you so much guys. So from all the messages I got, a lot of people were curious कि now that you've resigned, what's next? So what's next तो आपको thumbnail से पता चल ही गया होगा कि I have taken a position with Government of Canada and I have taken a position as an auditor. अब जो institution है या वो है I cannot disclose that at the moment because we're not allowed to. लेकिन ये है कि I have taken a job with the federal government of Canada. So I think ये enough होगा आपको समझने के लिए कि what type of job I'm doing at the moment. Now that I've recently received a job and I have been through the entire process कि क्या process था और किस तरह से मुझे job मिली, so I thought कि it would be a good idea to share it with you guys. And I just met a friend yesterday and she was like कि government की job तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी औकात से ही बाहर है, which is so true because that's what I used to think कि being a new immigrant in Canada, government job is something totally out of my reach, which is not true guys. So मैं जब while I was in Canada, I met two people who were working for the government of Canada. So मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली कि if they can do it, I can do it too, and that's why I applied. वरना अगर मैं यही सोचती रहती कि I cannot get in, मैं कभी भी apply ना करती. So that's the purpose of this video, to inspire you guys. कि if you are interested too, I'm gonna share all the details I have with you guys. If you're interested, you can apply. So that's the purpose of the video because I got inspiration from someone. So I want you guys to get inspired from me too. अगर मैं आप लोगों की थोड़ी सी भी help कर सकूँ, so I will be happy to do that. अब ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, so just go and grab your coffee or something because we're gonna have a detailed discussion on the process and the entire thing कि आपने अप्लाई कैसे करना है और क्या प्रोसेस है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट. गवर्नमेंट जॉब्स की बात आती है, सो देयर लाइक आई बिलीव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स. पहली होती है जो आप सिटी की लेवल की गवर्नमेंट होती है, विच इज सिटी ऑफ टोरंटो. I actually applied at a lot of positions in City of Toronto too, but I never received anything back from them. मुझे कभी कोई email नहीं आई उनसे, not even a rejection email कि मुझे पता हो कि I'm not being considered for the said position. So इनका process इतना transparent नहीं है. I never heard anything from them, but उनका pay rate is definitely better than the federal government का pay rate. So if you're after pay rate, do check those jobs out. वो often आती रहती है, especially because I belong to finance and accounting and auditing field, so I know कि वहाँ पर फाइनेंशियल एनालिस्ट की बहुत सारी पोजीशंस की ओपनिंग आती रहती है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, do check that out. But again, I don't know if you're gonna hear anything back from them because I did not hear anything back from them. अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल होती है आई थिंक द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. आई हैव नेवर अप्लाइड फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दोज जॉब्स एज वेल, बट ये भी एक लेवल होता है फॉर विच यू कैन ऑल्सो अप्लाई. द थर्ड वन विच आई अप्लाइड एंड गॉट इन इज द फेडरल गवर्नमेंट विच इज द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा. सो दैट्स वेयर आई वर्क एट द मोमेंट. सो वहाँ पर ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ओपनिंग्स आती है दे डू पोस्ट इट पब्लिकली. सो चेक लिंक्डइन, गूगल करें एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब. तो वहाँ पर जब भी कोई न्यू जॉब पोस्टिंग आएगी यू विल गेट एन ईमेल नोटिफिकेशन एंड देन यू कैन गो एंड अप्लाई. लोग कहते हैं कि इफ यू हैव ऑलरेडी समबडी हु इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, सो वो आपको इंटरनली बता सकते हैं कि इफ देयर आर ओपनिंग्स व्हेनेवर दे आर हायरिंग एन आउटसाइडर तो वो पब्लिकली पोस्ट जरूर करते हैं. Nobody told me, मेरे सिर्फ एक अंकल ने मुझे बताया था कि there is some opening which is posted publicly. So then मैंने I went to Google, मैंने जो है वो देखा जॉब पोस्टिंग और मैंने जो है वो thoroughly read किया कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी. Though I'm a CPA member, एक्चुअली मैं उस टाइम पे नहीं थी, मैंने जो मेंबरशिप अप्लाई की हुई थी लेकिन मुझे अपना मेंबरशिप की जो है ना कंफर्मेशन मिली नहीं थी उस वक्त. सो और उनको रिक्वायरमेंट्स में CPA मेंबर दिखा हुआ नहीं था. They only wanted someone who had accounting courses. So if you guys know, I was an ACCA member. तो मैंने उसी membership की basis पे ही apply किया था because at the time when I applied, I was not a CPA member. मैंने apply किया हुआ था लेकिन मुझे membership मिली नहीं थी. ठीक है. अब if you have not studied from Canada, so they required कि आपका जो वो evaluation हुआ हो from Canadian accounting body. ठीक है. सो मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स में दे वांटेड योर ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सो जब मैंने अच्छा अब अपने अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज यू मेक एन अकाउंट. आप जब अकाउंट बनाते हैं सो इट आस्क्स यू फॉर ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर एजुकेशनल क्रेडेंशियल, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर आपका वीजा स्टेटस बिकॉज आई वांट समबडी हु इज PR और ए सिटीजन. ठीक है. उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स में दे विल आस्क यू टू पुट योर ट्रांसक्रिप्ट एंड आपके जो है वो कोर्सेज की evaluation if you have not studied from Canada.
सो व्हेन वी वर मूविंग टू कनाडा हमने वैसे वैल्यूएशन कराई थी बिकॉज वो तो सब कराते हैं राइट. सो आई जस्ट एडिड दैट बिकॉज मेरे पास उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई CPR मेंबरशिप एज आई मेंशन्ड अर्लियर टू. ठीक है, तो मैंने वही अटैच किया. मैंने कहा कि देखते हैं कि क्या होता है ना. देन ये हुआ कि आई अप्लाइड इन मे के एंड में मुझे एक ईमेल आई फॉर अ टेस्ट. देन आई अपियर्ड फॉर दैट टेस्ट. उसके बाद मई गुजर गया, जून गुजर गया. आई डिड नॉट हियर एनीथिंग बैक फ्रॉम देम. मुझे लगा कि मे बी आई फेल द टेस्ट और जो है वो मुझे अब कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आने वाली है. देन अगस्त में आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम देम एंड आई पास द टेस्ट विद 89% मार्क्स. ठीक है, सो आई वॉज एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, उसी वक्त जो मुझे उसका रिजल्ट आया, आई गॉट अनदर ईमेल विच सेड कि द इवैल्यूएशन रिपोर्ट दैट आई हैव अटैच्ड इज नॉट सफिशिएंट and I need to get my accounting membership या जो भी मेरे accounting के courses है, I need to get it evaluated by CPA Canada. क्योंकि immigration के टाइम पे तो वैसे हुए थे राइट. अब जो है वो चाह रहे थे कि वो CPA Canada से evaluated हो. बट मुझे ईमेल आई अगस्त में एंड बाय द टाइम मुझे वो ईमेल आई मेरी CPA की मेंबरशिप आ चुकी थी. सो आई गॉट लकी उस टाइम पे कि मुझे दोबारा CPA से वैल्यूएशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज नाउ आई वाज अ मेंबर ऑफ CPA जो कि कैनेडियन बॉडी है. सो मैंने उस ईमेल के रिप्लाई में अपनी CPA मेंबरशिप की सर्टिफिकेट सबमिट करा दी जो कि एक्सेप्ट हो गई. ठीक है, फिर जो है वो अगस्त में रिजल्ट आने के बाद अगेन आई डिड नॉट हियर एनीथिंग बैक फ्रॉम देम फॉर अबाउट अ मंथ और सो. उसके बाद मुझे एक ईमेल आई एंड देन आई हैड टू अपीयर फॉर अनदर टेस्ट. ठीक है, अच्छी बात ये थी कि वो जिस चीज़ का भी टेस्ट होता था वो ईमेल में मेंशन करते थे कि योर नेक्स्ट एग्जाम और टेस्ट इज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एंड वो टेस्ट इस चीज़ के ऊपर होगा. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर अप्लाइंग एज एन लेट्स से इनकम टैक्स ऑडिटर, तो वो आपको बताएंगे कि आपका एग्जाम इनकम टैक्स एक्ट का एग्जाम है एंड उस डेट पे. सो यू डू गेट सम डेज इन बिटवीन लाइक अ वीक और सो कि आप स्टडी करके एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट बिकॉज दे ओनली कंसिडर पीपल who have scored more than 60% या जो भी है वो आपकी ईमेल में मेंशन होगा कि इस टेस्ट में you need to have at least a score of 60% to be considered for the position. ठीक है, सो मुझे ये बात अच्छी लगी कि they used to tell beforehand कि टेस्ट किस चीज़ का है and passing marks क्या है. ठीक है, so then again I got an email and then मैंने वो पढ़ के and then I gave the test. Again I did not hear anything back from them for about a month or so and then मुझे email आई कि I passed वो टेस्ट में 3 components थे. So I passed in 2 components और एक में मैं 4 और 3 मार्क्स की वजह से मैं रह गई थी. अच्छा, now I got the test results. मैं थोड़ी सी disheartened हो गई कि I missed 1 component by 3 or 4 marks. लेकिन जो है वो उसी ईमेल में लिखा हुआ भी था कि even if you don't pass in one of the components, you may be eligible for positions in the other components की position. I hope it makes sense to you guys. If not, let me know in the comment section और मैं इसको अच्छे से explain दोबारा से कर दूँगी. So उसके बाद जो है वो I got an email and they required me to submit a police check. Because I was new to the country and they wanted like 5 years का record and I have not spent 5 years in Canada. So फिर मैंने क्या किया कि पुलिस चेक के लिए again when I was applying तो पुलिस चेक तो हम कराते ही हैं right at the time of applying for the PR. So मैंने वही वाला सबमिट करा दिया thinking कि let's see if they accept it. If not then मुझे नया करवाना पड़ता. Anyway it got accepted. So again I got lucky here as well. तो यहाँ पर भी मेरे पैसे बच गए थोड़े बहुत. इफ़ यू गाइज नो ऑलरेडी आई एम अ लिटिल कंजूस, सो जहाँ पैसे बचते हैं मैं बचा लेती हूँ. एनीवे तो वहाँ पर भी वो एक्सेप्ट हो गया. उसके बाद मुझे जो है वो एक ईमेल आई, आई एम स्केड्यूल्ड फॉर एन इंटरव्यू. तो फिर आई गॉट नर्वस. मैंने कहा कि अब 2-3 एग्जाम्स ऑलरेडी 2 एग्जाम्स, बट अगर हम उसके कंपोनेंट्स चेक करें तो 4 एग्जाम्स तो हो चुके हैं. अब इंटरव्यू भी ये लोग बहुत सारे लेंगे. ठीक है, बट लकीली जो मुझे इंटरव्यू कॉल आई वो सिर्फ एक ही इंटरव्यू था एंड दैट वाज लाइक द लास्ट स्टेज. तो वो इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा हुआ. उसके विद इन 2 weeks आई गॉट एन ईमेल और ईमेल था ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दैट वाज लाइक मुझे लगा कि हो गया, बट द टाइमलाइन इज लाइक आई अप्लाइड बैक इन मई और मुझे कॉल आई इन जनवरी इन दिसंबर एंड आई हैड टू गिव द ज्वाइनिंग फ्रॉम जनवरी. सो मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 7 से 8 महीने का ये पूरा प्रोसेस था जिसके बीच में आई वुड हियर फ्रॉम देम 1 महीने, फिर 2 महीने तक नथिंग, फिर समथिंग, फिर नथिंग. इस तरह करते करते द प्रोसेस वाज वेरी लॉन्ग बट इट वाज एक्चुअली वर्थ इट.
अब जब मैंने ज्वाइनिंग की तो मुझे पता चला कि मैंने तो मई 2021 में अप्लाई किया था, बट देयर वर सम पीपल जिन्होंने जनवरी 2020 से अप्लाई किया हुआ था एंड दे वर स्टिल इन द पूल. सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट हियरिंग एनीथिंग बैक फ्रॉम देम, डोंट वरी, बिकॉज हाउ द प्रोसेस वर्क्स इज व्हेन यू अप्लाई यू गो इनटू द पूल. ठीक है. एंड देन ऐसा नहीं कि आपकी एप्लीकेशन फॉरन एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाती है. यू आर इन द पूल. जब ओपनिंग्स होंगी सो वो पूल में से आपका जो है वो एप्लीकेशन जरूर निकालेंगे एंड देन दे विल सी इफ यू आर एलिजिबल और नॉट. एंड देन वो आपको फर्दर उसके लिए कंसिडर करेंगे. आपको फर्दर एग्जामिनेशन की ईमेल्स आएगी या व्हाटएवर फर्दर स्टेप्स है वो आपको उसके लिए कंसिडर करेंगे. सो इफ यू ऑलरेडी अप्लाइड, डोंट बी डिसहार्टेंड कि आई हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम बैक, इट्स बीन 3 months और अब तो कुछ नहीं होगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू स्टे इन द पूल एज लॉन्ग एज यू डोंट विथड्रॉ द एप्लीकेशन. सो ये है कि एप्लीकेशन आपने अच्छे से बनानी है. गिव देम एज मच डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज यू कैन, स्पेशली इफ यू आर एन इंटरनेशनली ट्रेन्ड अकाउंटेंट और योर स्टडीज आर डन इंटरनेशनली, बिकॉज उनको बताएं कि यू डू हैव द क्वालिफिकेशन दैट दे रिक्वायर फॉर द पोजीशन. ठीक है. डॉक्यूमेंट्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर होने चाहिए. सो एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छी सी बनानी है. ठीक है. तो ये था मेरा पूरा प्रोसेस. आफ्टर आई गॉट द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई हैड टू जॉइन विद इन 14 days, which was awesome because I was waiting for that day since so long. So it came as a surprise and I was very happy. So ये थी मेरी पूरी स्टोरी और ये थी मेरी पूरी टाइमलाइन. नाउ थोड़े से जो है वो मिथ्स है लोगों को, लेट्स डिबंक देम. अब जो है वो व्हेन आई टेल पीपल के जो है वो आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, लोग पूछते हैं कि ओके डिड यू हैव अ रेफरेंस. Number one, I did know someone who worked for the government of Canada, but entire process में I was never asked for a reference. कभी हमसे reference के बारे में नहीं पूछा गया. So literally it doesn't really matter if you have a reference or if you don't have a reference. उसके अलावा I think a lot of people think you need to be a CPA member in order to apply for accounting or auditing positions. But let me tell you कि it's not required. जब जो आपकी job posting है, if it's required तो वो वहाँ पर specifically mention करेंगे. If they're not mentioning, I think it's not required. You can still apply and be considered for the position. Because अभी जब मैं training में हूँ and I'm meeting a lot of my colleagues, they are not CPA qualified. Some are still studying, some are thinking to start CPA. So उस level पे भी लोग हैं. So again, it's not required. It's mandatory नहीं है कि आप CPA member हो. Even if you're internationally trained accountant, you can be considered. ये एक बड़ा myth है जो लोगों को लगता है कि if I'm not a member of CPA, I cannot apply for accounting or auditing position. Doesn't work like that. You can still be considered. उसके अलावा जो है वो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब कम्स विद अ लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स. जैसे हमें बैक होम मिलते हैं, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है. It is different here, but I think it calls for another video where we can compare government sector and private sector की jobs. So if you're interested in that video, please comment down and I will make a video on that topic. So I think enough information हो गई है, video बहुत लंबी हो गई है. So if you enjoyed the video, please guys subscribe and thank you so much for all. Thank you so much to those who messaged me and wished me good luck and who wanted to know more. This is the video for you guys. I hope मैंने enough information दी होगी. If you still have any questions, put it in the comment section और अगर मुझे answer पता होगा तो definitely I will reply. If not, I will try to search करके आप लोगों को आंसर बता दूं. And I'll see you guys in the next video. Till then, bye.